वेडनेसडे टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन वी आर द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। जैसे ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा enhance हो सके, राइट? नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन must be coming to your mind is that what one needs to do in order to change the medium from Hindi medium to English medium. Start listening things more and more into English, right? Start listening things more and more, and then you start writing whatever you can just understand out of reading this. Okay, so this is how definitely within a matter of a month you'll see huge improvement in yourself, right? So Hindi medium student should start reading the newspaper for sure, right? So this is going to be a mix of Hindi and English. Mostly I'll try to speak English so that जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनने की आदत डालें, राइट? सो जिससे उसके उनके अंदर एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल हो कि येस आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, राइट? सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कंटेंशियस क्राइटेरिया. कंटेंशियस मीन्स समथिंग विच इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, राइट? वेयर एवरीबडी इज नॉट गेटिंग अग्रीड टू, right? Means all the states, means some kind of situation is there that certain states are not agreeing to certain things, right? So here we are going to talk about the center must revisit the center must revisit the PM-USHA. Okay, now what is the PM-USHA? This is going to be important. This is for the general studies paper 2. Okay, the government policies and intervention. Okay, under that you can study this. Okay, so what is the PM-USHA? And what are the dissenting states? Mean the states in India, which of the states they are not getting agreed to the PM-USHA, right? So here the main issue is the PM-USHA. All right, so by mandating states and union territories to implement the national education policy, right? So here what we are looking at the national education policy, right? So national education policy is the main issue over here. Okay, at the 2020, and adopt contentious academic criteria. So there is certain kind of issues where all the states are not getting agreed to, right? So what is that issues? It is about the academic criteria, right? Now what is about that? So in order to avail funds under the Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan, right? So the full form of the PM-USHA is that Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan. So from here to here it is USHA. Okay, Uchchatar Shiksha Abhiyan. Okay, and this comes under the Ministry of Education. So this is important for the prelims point of view. Okay, appears to have made the central scheme. So this is a central scheme also. Okay, this Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan is the central scheme, exclusivist, and actually center has made this particular scheme in a way that it has become very very exclusivist, means very very different in a nature. How? Let us see that the guidelines for the scheme, an important or an improvised version of the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan. So before USHA it was Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan. Okay, RUSA 1 and RUSA 2. Okay, to ensure increased access means everybody has the facility to get into schools or the colleges, right? So this is what the motto of that. And equity means there has to be equality and excellence in the state higher education system with central funding. Now everyone can have the kind of opportunity to excel in the state higher education system, right, with the central funding. So this under USHA central government will fund, right? What to be released in June. Okay, so only 22 states and union territories have joined the PM-USHA. Okay, which requires a memorandum of understanding to be signed between the states and the Department of Higher Education. So West Bengal, Tamil Nadu and Kerala are among 14 states and union territories which have refused to get on board. So here there are 3 states which have not joined so far. One is the West Bengal, another is the Tamil Nadu, and third one is the Kerala. Okay, so they are not getting agreed to the terms of the government of India with respect to the USHA. Okay, so apart from embracing the NEP 2020, so NEP here is National Education Policy, the memorandum of understanding including inter alia. Inter alia means among other things, means कुछ और चीजें उससे संबंधित जैसे हो तो क्या commitment from the states on adopting guidelines for the national credit framework, right? So national credit framework is one important thing in this particular USHA. Okay, and choice-based credit systems, choice-based credit system for 4-year undergraduate program. Now under USHA or under a new education economic policy 2020, there would be 4-year undergraduate program. Okay, 4-year undergraduate program. So without agreeing to these conditions, the state cannot avail of a share in the funds an outlay of 12,926.10 crore between 2023-24 to 25-26, right?
सो अगर किसी भी स्टेट को इन चीज़ का फ़ायदा उठाना है, जो ये फंड है इसका शेयर इसमें शेयर लेना है, तो स्टेट्स को ये दो कंडीशंस को मानना होगा, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ओके, फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर इनको अग्री नहीं करते हैं स्टेट, राइट, विदाउट अग्रीइंग टू दीज कंडीशन, अगर इन शर्तों को स्टेट्स नहीं मानते, राइट, सो स्टेट कैन नॉट अवेल, मतलब उन लोगों को ये जो फंड नीचे दिया हुआ है ना 12,926.10 करोड़ का, इसका फायदा वो उठा नहीं सकते, राइट। एम्बार्क टू इम्प्रूव स्टेट रन हायर एजुकेशन सिस्टम। सो अभी आप ये समझ सकते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका मेन मोटो क्या है, टू इम्प्रूव द स्टेट रन हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो सारे स्टेट्स हैं उनमें जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, मीन्स अंडर ग्रेजुएट जहाँ से स्टार्ट होते हैं, उनको इम्प्रूव करना भी ऊषा का या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक मोटो है, राइट। तो ऐसे करके इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट 40% ऑफ द फंडिंग हैज़ टू बी बॉन्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर आप सरकार की ये दोनों बात को मानते हैं और आप जो है पीएम उषा को ज्वाइन करते हैं, तो आपको 40%, मतलब जो भी स्टेट ज्वाइन करेगा उसको 40% फंडिंग अपने आप से करनी पड़ेगी, एंड 60% फंडिंग विल कम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स अ फ्यू स्टेट्स हैव स्ट्रांगली अपोज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो मतलब जो पिछले 2-3 सालों से जब से ये आई है तब से बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपोज किया है, बोथ एट द ड्राफ्ट, मतलब जब ये केवल एक मसौदा के रूप में था, केवल एक लिखित रूप में था थोड़ा सा, एंड इम्प्लीमेंटेशन, और जब इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया उस स्टेज पर भी बहुत सारे स्टेट्स ने इसको जो है अपोज किया था। सो सच एज तमिलनाडु, सो जो तमिलनाडु स्टेट है वो सबसे ज़्यादा अपोज कर रहा है इसको, हैव इनिशिएटेड मेजर्स टू ड्राफ्ट देयर ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। तो उन्होंने खुद से अपने एक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाने का मन बनाया, राइट। सो देयर आर डिमांड्स टू रिस्टोर एजुकेशन टू द स्टेट लिस्ट फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट। तो ये है कि पहले जो स्टेट एज अ सब्जेक्ट, सो स्टार्टिंग में एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट वो किस में होता था, कंकरेंट लिस्ट में होता था, बट उसको मूव कर दिया गया है स्टेट लिस्ट में, राइट। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, राइट। सो जो इसकी अभी की जो डिमांड है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, देयर आर डिमांड्स टू रिस्टोर एजुकेशन टू द स्टेट लिस्ट फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट। पहले ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हुआ करता था एजुकेशन, सो ऑल द स्टेट्स हैव देयर full control that what they want to do with respect to the education in their state। अभी क्या है, इसको कंकरेंट लिस्ट में उठाकर रख दिया गया है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल्सो डू वट एवर इट वॉन्ट्स टू डू, राइट। सो ये डिमांड है कि एजुकेशन को जो है फिर से आप स्टेट लिस्ट में लाइए, ओके, फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट। सो वेयर इट वॉज मूव विदाउट डिबेट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सो इमरजेंसी के टाइम में जो एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट था उसको स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया था। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इट वुड अपीयर दैट द कंडीशन फॉर द पीएम उषा हैव बीन टेलर्ड टू इम्पोज NEP 2020 थ्रू द बैकडोर। तो मतलब ऐसे ही बताया गया कि पीएम उषा को फिर मतलब इस तरीके से बनाया गया कि उसको बैकडोर से इम्पोज किया जा सके, राइट। दीज स्कीम्स ऑल्सो रिक्वायर्स एडॉप्शन ऑफ द मल्टीपल एंट्री, राइट, adoption of the multiple entry and exit option। Multiple entry and exit options are required actually to join this or to adopt this, right, in degree programs, है ना। बेसिकली जो अंडर ग्रेजुएट स्टार्ट होते हैं वहां से, एंड नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क गाइडलाइंस, इन सबको आपको ओके करना पड़ेगा, राइट, ओनली देन यू कैन ज्वाइन। सो दिस when academic stakeholders and administrators have expressed serious concern about the multiple entry and exit option। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा में, मीन्स जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मीन्स जो चांसलर्स वगैरह हैं, राइट, उन्होंने बहुत सारी सीरियस जो है वो व्यक्त किया, मतलब बहुत सारी वो व्यक्त की हैं, चिंताएं व्यक्त की हैं, कंसर्न्स व्यक्त किए हैं कि ये जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का जो ऑप्शन है ना, पॉसिबली ट्रिगरिंग मोर ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द हायर एजुकेशन सिस्टम। इसकी वजह से ज़्यादा बच्चे जो है हायर एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट लेने बाहर जा रहे हैं, ठीक है। क्यों जा रहे हैं, अभी कहते हैं एम्फेसिस ऑन अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो जो ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है अंडर NEP 2020, और उसके बाद पीएम उषा में फंडिंग जो बताई गई है, हैज़ ऑल्सो इवोक्ड कंसर्न्स। ये कैसे, मतलब कंसर्न्स को बढ़ाता, चिंता कैसे होता है, एज टू वेदर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट, जो बच्चा सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है, उसके पास कहाँ से इतना पैसा और समय आएगा कि वो एक एक्स्ट्रा ईयर कॉलेज में बिता सके, है ना। क्योंकि अर्लियर इट यूज्ड टू बी ऑफ 3 years बट नाउ इट इज ऑफ 4 years, राइट, टू एक्वायर अ डिग्री, राइट। सो बिसाइड्स इवन अ स्टेट सपोर्टिंग द NEP 2020 मेघालय, तो यहाँ तक कि जो एक स्टेट है मेघालय, जो कि NEP 2020 को सपोर्ट भी करता है, उसने ही बोला है कि आप जो ये फंडिंग का जो क्राइटेरिया है ना उसको आप रिविजिट करिए प्लीज़, है ना, टू रिविजिट of the funding criteria and an increase in the number of beneficiary units since its
since its state university is in the initial stage of being operational। तो मेघालय बोला क्योंकि हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी इनिशियल स्टेज में है ऑपरेट करने के, तो थोड़ा सा हमें और फंडिंग के बारे में और अच्छे से मतलब ज़्यादा बेनिफिट हो, ऐसा कुछ जो है आप अपने एनईपी में या अपने उषा में करिए। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में इट वुड बी प्रूडेंट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए एक बुद्धिमानी भरा काम होगा, टू निगोशिएट बेटर टर्म्स विद द डिसेंटिंग स्टेट्स। तो मतलब निगोशिएट करें, जो भी स्टेट्स जो है एनईपी को नहीं अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके साथ बेटर टर्म्स के साथ आप निगोशिएट करिए। तो जिससे क्या होगा, रिस्पेक्टिंग द एसेंस ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो जिसकी वजह से आप जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी फॉलो कर पाएंगे, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। ओके, so thank you so much for watching this video।